Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So, students, today we will discuss the chapter number 4, that is motion in a plane. We are going to start this chapter. So, students, in this first topic is need for vectors. So, what is the need? First of all, we should aware of what is the need of vectors. So, students, as we know, before this we had discussed straight line motion. In that we have only one or two directions that we take as positive or negative, as we had discussed that acceleration may be positive, negative. Velocity also we have taken more positive or negative based upon the direction. But when we deal with the motion in a plane, that is motion in 2 dimension or 3 dimensions, then we have to take number of directions. So in that the directions may have 2 or more than the 2 directions. Then for this we have to use a different type of arrangement to calculate the given direction. So students, in this we have in order to deal with these situations, we have developed the vectors. So students, basically, first of all, we will discuss what are the scalar and vectors. So basically, what are the scalar and vectors? So scalar quantities are those which have only magnitude. For example, distance have only magnitude. Likewise, speed have only magnitude. But if we talk about the velocity and the displacement, these have magnitude and also the direction. So that's why these are called the vector quantities. Scalar, which has only magnitude, but vectors, those which have magnitude as well as direction. Next we have representation of the vector, how we represent it. So these are represented by a arrow. So basically the head of the arrow represent the direction of the given quantity. So vector quantity is represented by a straight line with an arrowhead over it. The length of the line gives us the magnitude. जो इस line की length है, that gives us the magnitude. Okay. So next we have position and displacement vectors. So what is the position vector? A vector which gives us the position of an object with reference to the origin. So students, we have the position and this is the position vector. So vector which gives us position of an object with reference to the point. So this is the position vector. Suppose as you can see in the diagram, तो यहाँ पे कोई P point हमने मान लिया, तो P point की जो position है, ठीक है, with respect to origin, वो ये line बता रही है कि ये इसकी position है. So this is called the पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन एन गिवन टाइम पीरियड. तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली दी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो पोजीशन यहाँ पे देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है कि पी पॉइंट पे पड़ा था पहले, ठीक है, अब उसने जो है पोजीशन अपनी चेंज कर ली और क्यू पॉइंट पे ऊपर चला गया. अब ये इसका होगा द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू. तो स्टूडेंट्स, इनके दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये बता रहा है हमें कि इन्होंने कितनी जो है अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की है. सो हियर पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, next we have zero vector. Zero vector or null vector is a vector that has zero magnitude
and an arbitrary direction. It is represented by 0, उसके ऊपर एरो. ठीक है, तो इसकी नीड क्या है? नीड ऑफ द ज़ीरो एरो. द नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर राइजेस ड्यू टू फॉलोइंग सिचुएशंस. नंबर 1, अगर मान लो हमें वी हैव टू वेक्टर्स a इक्वल टू b. ठीक है, a और दोनों b इक्वल है. देन व्हाट इज़ a माइनस b, है ना. तो जैसे 5, ये जो a वेक्टर है ये भी 5 है, b वेक्टर 5 है, तो 5 माइनस 5 0. सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ ज़ीरो वेक्टर. तो इन दिस वे वी कैन हैव ज़ीरो वेक्टर ऑल्सो. After that we have properties of zero vector. When a vector is added to zero vector we get the same vector. अपने किसी वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर में ऐड करते हैं, वही अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आएगा. और when a vector is multiplied by ज़ीरो we get ज़ीरो वेक्टर. और कोई रियल नंबर जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं and also we get the ज़ीरो वेक्टर. So if lambda and mu are two different non-zero real numbers, then the relation, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? lambda a equal to mu b. ठीक है, can hold only if the both a and b are the zero vectors. So students, this is zero vector. In the next video we will discuss multiplication and addition of the vectors. Thanks for attending class.